जय जिनेन्द्र, वेलकम ऑल। नवकार मंत्र के साथ आज का इवेंट शुरू करेंगे। जीतो डेयरी स्पॉन्सर ला मार्केस ज्वेलरी का आभार व्यक्त करते हैं। लेट्स व्यू वीडियो फॉर देम। Jai Jinendra. Good evening to all. While we are awaiting Kiran ji, our guest speaker today, let's do some spot quiz questions. I will be asking few quick questions to the audience and you will reply that in the chat box. The first correct reply that our team notices will be picked up and the name will be announced, though there is no prizes. So let's begin. First question hai, who is India's first woman president? Who is India's first woman president? Please type in the chat box. इंडिया की पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? Hello. Hi, everybody. Oh, it's so nice to see a winner. Sunita Shah has answered us first. We are very proud. And the first president was Pratibha Patil, Mrs. Pratibha Patil. Yes. Okay. So we will move on for the second question. Who is the first Indian and the first woman to be chosen as head of United Nations Police? इंडिया की पहली वुमन कौन थी जो एज ए हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन पुलिस के हिसाब से चूज की गई थी?
Please write your answer in the chat box. जय जिनेन्द्र। ओ रोमा भाभी, आपने तो मार ही डाला हमको। किरण बेदी इज द राइट आंसर एंड रोमा भाभी has answered first. Okay, round of applause to Roma ji. Okay, so अभी थर्ड क्वेश्चन के लिए हम मूव ऑन करते हैं. Name the first Indian woman who climbed Mount Everest. कौन सी इंडियन महिला थी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? Name the first Indian woman who climbed Mount Everest. We have a winner. She was very quick. लावण्या जी ने आंसर दिया है and she is right. नेहा जी आप ही आंसर बता दो अभी. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट इंडियन वुमेन जो चढ़ी थी, उसका आंसर है बचेंद्री पाल. लावण्या, वेल डन. ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम आईपीएस ऑफिसर. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी को आता है. No, we are not giving a chance to Lavanya again. Please. Name the first Indian woman Yes, to become. Yes, we have a winner. We have a winner. Okay. आंसर तो का किरण जी है एंड आंसर देने वाली है फाल्गुनी शेठ. ओह, और आपका स्टाइल भी बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस. ओके, तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंटरेस्टिंग क्विज है. नाउ हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन स्पेस? वाह. उस महिला का नाम बताइए, फर्स्ट इंडियन महिला का नाम बताइए जो स्पेस में गई थी. Oh, we have a winner. She's from India. Vishwa has answered the question and she says Kalpana Chawla. Well done, Vishwa. Yes, we are proud of Kalpana Chawla and also the winner. Okay, now which Indian Union Territory Dr. Kiran Bedi ji is the governor of? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. Which Indian Union Territory Dr. Kiran Bedi ji is governor of? Oh, we have one. Shrushti ji has answered the question and her answer is correct. I give you the honor of answering this question. Yes, it is really a tricky question. So, Shrushti ji, well done. Okay, so the next question is, I hope all are liking my questions. Who is the first Indian woman to become Miss Universe? अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछ लिया है. मेरे तो मुंह में पानी आ गया सुन के. धड़ाधड़ सारी लेडीज बोल रही है, आंसर दे रही है. हम विनर चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए. So all the ladies are winner, including me. Yes, and the answer is Sushmita Singh. Okay. Okay, the next question is, who is the first Indian woman to win medal in Olympics? Olympics में वो कौन सी पहली इंडियन महिला थी जिन्होंने मेडल जीता था? Heta Singh to everyone. She has answered the question. The answer is Saina Nehwal. The answer is Saina Nehwal, and well done. I think you have said Heta ji. Yes? Yeah, Heta ji. Okay. So in 1994, which government gave Raman Magsaysay Award to Dr. Kiran Bedi? In 1994, which government gave Raman Magsaysay Award to Dr. Kiran Bedi? कौन सी गवर्नमेंट ने 1994 में रमन मैग्सेसे अवार्ड किरण बेदी जी को दिया था? ऑप्शंस दे दो नीना जी. थोड़ा दिमाग लगाने दो ऑडियंस को. सही बात है आपकी. चलो लगाने देते थोड़ा सा. चलो गूगल कर लो भाई, हम आपको बहुत टाइम दे रहे हैं. हाँ. 60 सेकंड नहीं दे रहे, हम आपको 2 मिनट्स दे रहे हैं.
ये क्वेश्चन का किरण बेदी जी से रिलेटेड है, तो Oh, Harsha ji, the answer is wrong. चलो मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। फिलीपींस। Wow. What a Okay. proud moment for India. Yeah, all these ladies have made us proud. Okay, Even now our JITO ladies, even our JITO ladies, Dubai wing makes everybody proud, right? yes, and who is the first Indian woman grandmaster in chess? वो कौन सी पहली इंडियन महिला थी जो ग्रैंड मास्टर चेस में हुई थी? Who is the first Indian woman grandmaster in chess? क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं शायद। नहीं, हमारी ऑडियंस होमवर्क करके नहीं आई एक्चुअली। नहीं इतना नहीं, देखो सबके आ रहे हैं आंसर। हाँ जी आ रहे। आई थिंक लावण्या हैज आंसर्ड फर्स्ट। So लावण्या जी, well done. Okay, and the answer is S. Vijay Lakshmi. S. Vijay Lakshmi. Okay. The next question is, who is the first Indian and the first woman to be chosen as advisor of United Nations Department of Police? मतलब आप ये क्वेश्चन का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो वो कौन सी पहली इंडियन महिला थी और पहले ही महिला थी पूरे वर्ल्ड में जो की एडवाइजर चुनी गई थी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के लिए। इस बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। तो I think audience has understand the question. Audience has understood it so very well that everybody is answering the right answer. Oh, so wow. it's very difficult for me to choose the winner. So audience have done a very good homework on Kiran Bedi and come here. Agreed. Yes, and Kiran Bedi ji की personality ऐसी है कि everybody is like ना admiring her. नेहा जी, किरण जी आ गए हैं हमारे बीच। Yeah, please welcome her. We can see her in a beaming teal suit. Okay, so welcome Kiran ji. Now I invite JITO Ladies Wing President Mrs. Neena Vinay Chaudhary to join us, and who is currently joining us from Japan. Over to you, Neena ji. नीना जी आप म्यूट हैं शायद। Hello everybody. Hello डॉक्टर साहब, क्या हाल है? प्रणाम। Hello everybody. Anu here. All the way in Dubai. Namaste Kiran ji. All the way from Japan. Oh wow, that's lovely. Neena, Jito, you are from Japan. Yes, I'm in Hiroshima today. Oh my God. I'm on my vacation. Oh, so lovely. How lovely. Tanu, you are in, of course, Dubai. Yes. I'm in Dubai and I'll be talking to you after 20 years now. मैं last आपको अबू धाबी में मिली और बात करी थी। अच्छा. Lovely. We will catch up in the day. There is a small intro that Neena ji has prepared for you. Go ahead. So we will do the rituals like that. Okay. I'm also hopefully joined by Ujala, I hope. Oh, very good. Yes. Director good. of Navjyoti India. किरण के साथ तो उजाला होना ही है ना? Ujala कहाँ है मैं देख रहा? Ah, there she is. Ujala, raise your hand. Yeah, that's. Yes, I can see Ujala. Yeah. Hi, Ujala. India Foundation. She is the one who will stay connected to you, Tanu. Yes. And your entire team should stay connected. We are going to join you. We are going to have you collaborate in water issues in Sona area. Very good. Ujala will connect with you. We're going to make you adopt a village. Wonderful. तो ये village आपके नाम, एक काम आपके नाम। नहीं, काम तो आप कर रहे हैं, दूसरों का नाम हो रहा है। Over to Neena ji now. So Ujala ने शायद village identify, मैंने बोला था identify करके आना village, so that we can work with village panchayats. Yeah. गांव की पंचायत. So we're going to give leadership on water harvesting to women there. Very nice. Lovely. Carry on. Yeah. Neena ji. Jai Jinendra and Konbanwa. As they say in Japanese, a very good evening to everyone.
I truly express my gratitude, Kiranji, for accepting our invitation and taking out your precious time to grace this occasion. This is our second JITO Ladies Wing event for the year after the Peace and Happiness event in January. We have many interesting events planned during the year. We have an Ahimsa Run planned for 2nd of April. So please register and participate when the link is shared. Be a part of the Guinness Book of World Record to support peace. 23 countries, JITO chapters and 55 India JITO chapters are participating in this event. Last year, we had 6 successful events exclusively for our ladies members with refreshingly high participation. I am glad to share with you all, JITO Ladies Wing membership has more than doubled in last 1 year, and now I want your full support to increase our strength. Very nice. JITO Ladies Wing aspire to unite all Jain ladies in UAE. We are committed to impart knowledge and empower our lovely ladies. Women all around the world are changing and contributing immensely. They are working hard and breaking the glass ceiling. Today's women dare to challenge the odds. Recently, as you all know, The Elephant Whispers got an Oscar for an Indian production film by 2 women directors, Kartiki Gonzalez and Guneet Monga. There are many females who are at the helm, governing countries, managing finances. We have example from our own finance minister, Nirmala Sitharaman, to Indra Nooyi. SBI Managing Director, Mrs. Anshula Kant recently made history when she was named CFO and MD of the World Bank. Similarly, Geeta Gopinath was appointed as Chief Economist of the IMF. Women today are becoming bolder and are giving wings to their daughters and daughter-in-laws to fly and dream big. Today's men are doing the same and are motivating and supporting their wives, daughters, and sisters. After all, behind every successful woman, there is an understanding man who acts as a pillar of strength. We are grateful to all the supporting men in our lives. We all know that women blesses her family with selfless love, working round the clock. They build not only themselves, but also their entire community. Kiranji is one of those. I am profusely overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest for today, who believed in herself and chased her dreams fearlessly. Kiranji is the first women IPS officer in India. She was the only woman in the batch of 80 men during her training period. It is my pleasure to introduce my idol and a superstar for millions, an amazing personality who has many firsts to her credit. Simplicity is the best jewelry she wears. She is simple yet dynamic, bold yet humble. She is a trendsetter. Every woman's success should be an inspiration to another. Kiranji, we are very proud of you. Kiranji wears many hats. Born in Amritsar, Kiranji completed her MA in Political Science and a PhD from IIT Delhi. She is also a national tennis champion and won many medals. She has served the United Nations as civilian police advisor in peacekeeping operations. She was the Lieutenant Governor of Pondicherry from May 2016 to Feb 2021. Kiranji is author of many books. I'm sure some of you would have read Kiranji's books. Yes, Madam Sir, I Dare, It's Always Possible, Empowering Women, Broom and Groom, Overcoming Fear, and the latest being Fearless Governance. There is also a biopic on Kiranji's life called Yes, Madam Sir, and a Telugu film, Kartavyam, based on Kiranji's life. There are many documentaries and TV programs based
on Kiranji's life too. I am sure many of you would have seen Aapki Kachhari, a reality justice show about real life state of affairs, which was hosted by Kiranji. So Kiranji has done it all. Kiranji founded two foundations, Navjyoti and India Foundation, which serves the underprivileged in rural and urban areas, and was IG Prisons Delhi for last 30 years. Her foundation also runs a YouTube channel called Demonstrative Learning, where she and her team conducts online programs for youth, book reading, and interviews with celebrities. Kiranji has been awarded President Police Medal for Gallantry in 1979 by the President of India for her achievements. She has also received Roman Magsaysay Award in 1994 for government service, Pride of India Award in 1999, United Nations Medal in 2004 for her outstanding service, Mother Teresa Memorial Award for Social Justice in 2005, FICCI Award for Excellence, and the list of awards continues. Kiranji, welcome again. And what a delight it is to have you amongst us. In conversation with Kiranji will be Mrs. Tanu Bhandari. If you have any questions, please put in the chat box, and your questions will be answered during question and answer session. I would now request Mrs. Divya Javeri to share the slide of our JITO Ladies Wing Committee, who tirelessly work to give varieties of events for you. Very nice. Over to you, Divya. So this is the Ladies Wing Committee who tirelessly works for every event. Cheers for our team. Very nice. Very nice. We also have a small video montage prepared to honor and celebrate the achievement of extraordinary Kiranji Bedi. So over to Mrs. Divya Javeri for showing the video. खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल हम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल तेरे ही सपनों की बारिश है पानियों को रास्ते तू बनाने दे रोशनी के पीछे खुद को जाने दे रहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल Wow. Thank you, Neena ji. Thank you, Divya ji. Welcome, Kiran ji, again. My pranams to you. Jai Jinendra all. Year 1949. 3 wonderful women were born to have a lasting impression on me. My mom-in-law, and one in Amritsar, who was destined to not just have an impression on me, but a guiding force for millions across India and worldwide, Dr. Kiran. Yes, wohi to hai Dr. Kiran. जिसके नाम के साथ उजाला, किरण, positivity, Savera, वो ही है Dr. Kiran. Welcome, Dr. Kiran. I am Tanu Bhandari, and on behalf of JITO family, I welcome you again, and I will be in conversation with you today. We will have this conversation in both Hindi and English for the benefit of our viewers. So let's start. Are we ready, Kiran ji?
Yes, Tanu, thank you so much. Yes, yes. मेरे साथ एक Okay, और okay. नाम जुड़ा है, वो है चांदनी, जो कि आपका पानी का काम करेगी. अरे वाह. So we got उजाला, we got चांदनी. ये दोनों अरे जिले वाह. आपका गांव को पानी से अमीर करेगी. When you come to Okay. Delhi, तो आपको ये दिखाएंगी. Very nice, very nice. So everybody begins from when you became the IPS officer, but I would like to begin from when you thought of it. Like, how did it cross your mind कि मैं IPS बनूंगी? Because you were already an established tennis player. So was that a plan B या आपने सोचा था कि मुझे ये करना ही है? Because there was no legacy, no example that time. कोई था नहीं उस वक्त. मेरे सारे प्लान ए ही है, ए प्लान्स है. अच्छा. And they ran parallel. Okay. पढ़ाई parallel. I was a topper in the university parallel. Asian champion parallel. दोनों इकट्ठे चल रहे थे. और Also उधर going to the extent of PhD. yes. Then best NCC cadet parallel. Okay. Best athlete of the university parallel. Okay. उसमें इसलिए जीतो तनु इसलिए था क्योंकि जब मैं जो करती थी उसको तन मन से करती थी, लगन से करती थी. Yeah. हर चीज लगन से. That is the crux, yes. That is the crux, was that whatever I did it with full energy, full True. devotion, Yeah. full But dedication. did you ever feel intimidated in that very male dominated arena? या कोई तरह का, मुझे लगता नहीं आपको देख के कि कोई तरह का जेंडर बायस आपको कभी होल्ड बैक कर सका होगा, because we also know that in the batch of 80 अकेले थे तुसी. अकेली सीगी, लेकिन वो मुंडे डरदे सीगे. अच्छा. ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟ ਦੇਖਦੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? Very good. Or then you are in your track suits, you are in your fleet shoes. Correct. See, you are no ਚੁੰਨੀ ਦੁਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ. अच्छा. No ਸਾੜੀ ਜੋ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ. No, nothing like that. So it was very practical life, whether it was in dress, whether it was in thought, whether it was in action, whether it was in deed. Everything was practical. Very, Okay. very something which was suiting me, which was needing me. Mera kam tha. I did not dress for others. I dressed for myself. Correct. So koi cheez extra nahi. So from sports page to the crime page to the governance and issues, national issues page, you were on the move always, like you were graduating bit by bit and showing your mark. The work was showing, aapka kaam dikha raha tha. You are a karma yogi with karma in your mind. There is courage in your grit. Aapke dil mein compassion, reforms mein action, action mein reforms. So there was no holding back. So, but फिर भी आपको क्या ऐसा लगा कि did you अपनी काबिलियत प्रूव करते रहना पड़ रहा है, तो एक एक पायदान आगे जाने के लिए? हाँ, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए. अपने लिए. अपने लिए कि मैं और क्या कर सकती हूँ. नेक्स्ट क्या, जो कल हो गया वो तो बोरिंग है, वो तो हो गया. अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि कल भी आना है जब कल आए, लेकिन कल के लिए बीज तो बोना है ना. I have to keep sowing. I'm reaping today what I sowed yesterday and eating the fruits of yesterday. But what about sowing the seeds for tomorrow? I have to continue to sow the seeds for tomorrow. So that means whatever I did yesterday, I need to think for myself, how can I do it better today? And so that it's a better tomorrow whenever comes. If it doesn't come, excellent. If it doesn't come, you've done your best. You are leaving this world while doing your best. That means you have to take care of yourself so that you continue. So you are reaping today what you are today, what you did till yesterday. You will be tomorrow what you do today. Yes, very true, very true. That's the So, point. but you were a part of many, many peacekeeping missions at the UN. Kofi Annan, you worked with Kofi Annan. So how was it like working with Kofi Annan, and the fact that the feel that you are rebuilding torn apart countries, because at UN you do just that, like be it Sierra Leone or many, many, many of them. So the feeling that you're rebuilding a torn apart country, wo kaisi thi? It was an amazing experience where we actually built nations. We rebuilt nations. One of the first rebuilding nation of mine was Timor-Leste.
Timor. Okay. Timor is in Southeast. Timor, yeah. Timor, and which is called Timor Leste. उस अच्छा. वक्त वो बिल्कुल, मैं जब टिमोर लेस्टे, जब मैं पीस कीपिंग में गई, मेरी पहली मिशन वाज टिमोर लेस्टे. एंड व्हेन आई वेंट टू टिमोर, कोई घर की छत नहीं थी. सब घरों की छतियों ने, वो इंडोनेशिया से जो आए थे गुरिल्लाज या कोई, सब ने आग लगा के सभी घरों की छतें उड़ा दी. और सभी लोग, बगर मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस थी वहां. इतना ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ कंट्री वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. और ना उनकी पुलिसिंग, ना उनका जस्टिस सिस्टम, कुछ भी नहीं था. दैट्स व्हेन द यूएन मेड दिस इनटू अ पीस कीपिंग मिशन. और उसको पीस कीपिंग में वहां पर गई हम लोगों ने. यूएन तो बड़ा एक फैमिली होती है, सभी रिसोर्सेस लेके जाते हैं और हर एक का काम बटा होता है. मेरा काम पुलिसिंग एंड रूल ऑफ लॉ था. तो मैंने वहां सारी पुलिसिंग को हम लोगों ने मिलकर रिवाइव किया, नई रिक्रूटमेंट्स की, रिक्रूटमेंट्स करके ट्रेनिंग करी, उनके पुलिस मैनुअल्स बनाए, उनकी ट्रेनिंग मैनुअल्स बनाए, और फिर उनके एकेडमी बनाई. सो शुरू से लेके तक जब रिक्रूटमेंट हो गई, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली रनिंग कंट्री नाउ. सो लेकिन उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट वो थे जो नोबेल लॉरिएट थे, उनको पीस अवार्ड मिला था, और उनकी पहली लीडरशिप एक बड़े अच्छे हाथों में गई. So this is how we started with East Timor. It was called East Timor. Now it's called Timor Leste, and it's in Southeast Asia, as you know. So ये था, we started from nothing, but that's what UN does. It's called nation building, country building, peace building, rule of law. Prisons भी उड़ गए थे, so prisons भी खोले, हर एक UN का. लेकिन हम लोग सब मिलके काम करते थे. तो पुलिसिंग का तो मुझे, और विमेन पुलिसिंग को हमने बहुत रिक्रूट किया हुआ. There were lots of good women there. So हमने शुरू से ही women policing East Timor में लाए, जिसको अब Timor Leste कहते हैं. So this is what peacekeeping was. But travel करना, East Timor जाना, it was wonderful. It was a great experience. लेकिन ऐसे peacekeeping missions में जाकर मुझे ये feeling जरूर हुई तनु कि मेरा इंडिया is best. जब ऐसी बुरा हाल की कंट्री जब देखते थे, तब खुशी करते, भगवान का धन्यवाद करते थे कि मैं ऐसी कंट्री में हूं जहां सब कुछ है, शांति है, पुलिस सिस्टम्स है, गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट है, खाना है, और औरत की इज्जत है. अगर वो अपनी इज्जत को संभाल सके तो इस औरत की इज्जत की कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वो सिर्फ कमजोर ना अपने आप को समझे. सो आई थिंक, और मुझे इन्होंने सिलेक्ट किया एज अ पुलिस एडवाइजर. इट बिकेम द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड where a woman was appointed as the police advisor to the Secretary General in peacekeeping. और मेरा एक्सपीरियंस पुलिसिंग और प्रिजन्स का काम आया. वो काम आया क्योंकि दुनिया में ऐसा उनको कोई और पुलिस ऑफिसर नहीं मिला जिसके पास प्रिजन का भी एक्सपीरियंस था. मेरा बड़ा रेयर डेस्टिनी थी कि एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे प्रिजन चलाने का भी मौका मिला. सो प्रिजन चलाना, ये पुलिसिंग करनी, फिर अपनी स्वयंसेवी संस्थाओं को, जैसे नवज्योति इंडिया फाउंडेशन का मैंने जिक्र किया, मेरे पास वो भी एक्सपीरियंस था. ना किसके पास 3 एक्सपीरियंस होते हैं, सरकारी भी और सोशल इंजीनियरिंग भी. कैसे लोगों को जोड़ना, कैसे फंड रेजिंग करनी, कैसे कॉर्पोरेट्स को लाना, पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, क्राइम प्रिवेंशन करनी, नशा मुक्ति केंद्र चलाना. ऑल दिस वाज माय एक्सपीरियंस उतने सालों में. तो वो सारा एक्सपीरियंस मेरे काम आया जब मैंने पीस कीपिंग की. और मैं भी जाके यही करती थी, कभी ये भी करना और कभी एनजीओस को जगाना, क्योंकि एनजीओ का रोल मैं समझती थी. सो आई थिंक दिस व्हाट हैपेंड वेंट इन माय फेवर. ओके, आपने आग की बात करी थी ना अभी, तो मुझे याद आया कि ऑन माय रिसर्च ऑन यू आई हर्ड दैट एक बार दिल्ली में आग लगी थी कहीं, यू एंड योर टीम वर देयर एंड योर मेन वर हेजिटेंट. सो आपने पास में एक हैंडपंप से यू ड्रेंच्ड योरसेल्फ कंप्लीटली एंड यू बार्ज्ड ओपन द डोर्स एंड यू ऑल, आपने 17 जानें बचाई हैं उस दिन, उसमें से 8 के अकेले आपने. सो नॉट जस्ट दिस बट योर निरंकारी मॉब हैंडलिंग विद जस्ट अ बैटन, यू नो, बिल्कुल डर नहीं लगा आपको उस वक्त? या जैसे मतलब अंदर से जैसे ट्रेनिंग, आपको एजुकेशन ट्रेनिंग सीखी जा सकती है, बट courage is something which is completely inborn. It is your own fabric. तो it's called वो जो जिगरा होता है वो कहाँ से आया आपके अंदर? We would want to know that. या जैसे आप एक ही रात में एक गाड़ी उठाई एंड क्रेन बेदी बन गए, तो वो जिगरा कहाँ से आया आप में?
Tanu, I think I'm addressing parents also and addressing mothers. देखिए जिगरा तो माँ की गोद से आता है, हर चीज घर से आती है. जिस तरीके से आप ग्रूमिंग करोगे अपने बच्चों को, वैसे ही बनेंगे, वैसे ही बनेंगे. मुझे तैयार किया गया था सेल्फ रिलायंस के लिए, अपना खुद संभालने के लिए अपने आप, और दूसरों का सहारा बनने के लिए. मुझे ये अपने आप को सहारा बनना नहीं सिखाया गया. मुझे इसे सिखाया गया कि हाउ विल आई बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू अदर्स. Like men are trained. Men are trained. Men grow naturally to be source of strength to others. उनको अपने आप इंस्टिंक्टिव होती है, मैंने बड़े होके अपना घर चलाना है और अपने परिवार को प्रोवाइड. They grow up as providers. Naturally the boys grow up as providers. उनको कोई सिखाता नहीं है, वो उनके इंस्टिंक्ट में है, उनके मन में भी है, और उसको जितना प्रोफेशनली स्किल कर दो उतना वो लायक बनता है बच्चा. संस्कार भी डाल दो तो और भी लायक बनता है. सो लड़के की भी परवरिश इंस्टिंक्टिव भी है और ग्रूमिंग भी है. गलत रास्ते पे भी जाते हैं जब जिनकी गलत संगत हो जाती है, लेकिन गुड बॉयज become very good providers both for their families and source of strength. I grew up exactly like that. I grew up as a provider, not to be getting provided. I grew up to be self-reliant. I took to make my own decisions. सब्जेक्ट क्या लेना है, यूनिवर्सिटी को करना है, कॉलेज में कहाँ जाना है, स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, टेनिस में अपनी सारी बुकिंग कैसे करनी है, रात को सबका भला कैसे करना है, डरना नहीं है. All this was by doing. We don't allow our girls to do. We do for them. We provide for them. The moment you tell the children to do for themselves, they become more decision makers. And it is decision from one decision to the other. And of course, you are there to make ethical decisions. Parents ka role hai, the children make ethical decisions, moral decisions, correct decisions, right decisions, but decisions. They must take decisions. We are there to see they stay. Unko rasta batate rahe, taki rasta bhatke nahi. This is what happened in my life. I kept finding my way. I kept getting ways shown. And I grew up like as a provider. So now I happen to be a woman, but I'm a provider. And when I'm a provider, naturally I will look for a job which provides for me. Yeah. So, and in a way that I'm strong to provide, not a routine job, but a strong job which makes me stronger. Naturally, the IPS was a great destiny which fell in my lap because I qualified for it. And of course, I had an option, I was given an option to change my service because the government of the day that time did not want women yet into the IPS because there were no women. वो डरते थे कि how can we have women in the Indian police service? But when I insisted on qualified equally, they knew they cannot deny it to me. And I was very clear why I wanted it. I was interviewed. Why did I want it? And when they had no choice, but they welcomed this change. And imagine, पहली लड़की 1972 में आई, उसके बाद और लड़कियां भी आई. अगर वो बदलना भी चाहती थी तो उनको बदलने नहीं दिया. Now the government wanted more women in the IPS. And today, इतनी उम्र में many women have now retired as director generals of police. इतने ज्यादा number आ गए and इतने well qualified, and today they are batch owners. They are winners. In fact, लड़कियों के बैच में, लड़कों के बैच में, they are the toppers in their own batch. They proved equally. What I did was I set the saying same training, same uniform, no exception for me. And now today the girls and boys, they always do the same training, and the same thing is traveled into Agniveer. Now girls and boys are joining Agniveer, whether it's naval, air force or army, and they're doing the same training. There's no change in their training. And I heard the interviews of some of the Agniveer girls. उन्हें बाल भी मेरे जैसे कटाए हुए हैं. और उन्होंने पूछा तुमने बाल क्यों कटा दिए? बोले इनके बड़े बालों के लिए टाइम नहीं. एंड उन्होंने पूछा अच्छा ऐसे रखोगे? बोले जब चैंपियन और सोचना होगा, अग्निवीर के बाद हमने फोर्सेस में ही आगे तरक्की करनी है या जाना है, तो सोचेंगे बाल बड़े करने के नहीं, लेकिन अब तो हमें ऐसा ही करना है because they're very comfortable. See, now we have a lady posted in Siachen also. There you, and you got women in Siachen. So women are now everywhere, whether it's central police organizations or and the director generals of police, whether it's now in the BSF or the Central Reserve Police Forces, in the toughest of the places. And Siachen, as you know, right, Setanu?
So I think it's a question of how you groomed and then you become. I a born provider because I'm by nature provider. मैं किसी से कभी depend नहीं करती कि मुझे कुछ मिले. I always see how can I give, how can I generate, how can I serve. See, that is why, Tanu, I was trying to connect all of you to become givers. Work with Navjyoti. Let us empower our women panchayat members to improve water condition in their respective villages. So I'm a giver. I'm again looking for more giving. So my expansion of giving wo rehta hai. How can I connect people to improve the quality of life of the people we work with? That's why my foundations actually are an expression of myself, of giving. While the government gives me to live, I live to give. You're giving back Give back. to the world and society. And you cannot live back alone, give back alone. What you do, you start connecting the haves with the have-nots. So I keep searching, where is the have? You are a have-not, the work with have-not. After you are also looking for some expression of giving. So आपको मैं रास्ता बताती हूँ, आपको मैं एक opportunity देती हूँ, link करती हूँ, फायदा हो गया. So question is, this is what good karma is all about. Being, as somebody is introduced, this is what being a karma yogi is all about. कि आप कर्म करते जाओ और फल बांटते जाओ. That's the point. फल exponential होता जाएगा. और exponential होता जाता है. होता जाता है. Very true, very true. Like you have never been deterred, चाहे resources कम हो, posting कुछ भी हो, situation कोई भी आ जाए सामने. So but you know, आजकल की generation बहुत जल्दी dishearten हो जाती है, especially the younger ones. हमारे साथ ये हो गया. We have gone through, so I mean, more than me, the elders have gone through so much more. But what is your piece of advice to them that, you know, how to stay with the grit for life, with the stand for life, how to stay guided and guarded both? खेल के हारो, खेल के जीतो. हारना और जीतना शुरू से करो. हर टाइम फर्स्ट आए ना, कोई बात नहीं, फर्स्ट आएंगे. हर टाइम फर्स्ट डे आए तो their life is finished. नहीं, तुम मेहनत करो, तुम पढ़ाई करो, तुम खेलो, जीतो हारो देखेंगे. हर चीज जीत के साथ नहीं लगा देनी चाहिए. हार के सीखने के लिए इनको हार के सिखाओ. We are giving them everything without effort, without earning it. You have to train your children to earn their life. Earn their life. उनको उतना ही दो जितना चाहिए और बाकी एफर्ट करने दो. और एफर्ट करने से उनको हिम्मत आएगी और बहादुरी भी आएगी और कई बारी वो थोड़ा कम में. See, we all are now having more. हम लोग चाहते हैं कि हाय आसानी से मेरे बच्चे को मिल जाए, आसानी से जल्दी गाड़ी मिल जाए, आसानी से उसको सब कुछ मिल जाए, अच्छे कपड़े भी मिल जाए, खाना भी अच्छा, रहना भी अच्छा, सब कुछ अच्छा. तो उसने तो कमाया तो कुछ नहीं, आपने तो सब कुछ बनाया दे दिया. तो अब जब लाइफ का चैलेंज जब आएगा तो क्या करेगा वो? हम लोगों ने तो मेहनत करके, मेरे माँ बाप अफोर्ड कर भी सकते थे तो भी मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ी, तो भी मैं गिन के एक पैसा खर्चा ताकि मैं स्कॉलरशिप, आई वांट टू बी अ स्कॉलर. कितनी आसानी से मेरी माँ बाप फीस दे सकते थे. मैंने कहा नहीं, आप अपने पास रखो, आई वांट टू अर्न अ स्कॉलरशिप. जब मैं टॉप कर रही हूँ तो मैं क्यों नहीं स्कॉलरशिप क्लेम करूं? और मैंने एक स्कॉलरशिप नहीं क्लेम की, मैंने 2 स्कॉलरशिप रूल तोड़े पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, जब उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स भी दी और एकेडमिक भी. मैं कहता है क्योंकि ऐसे होता नहीं है कि जो चैंपियन भी हो और साथ में स्कॉलर भी हो. तो मैंने कहा यार मेरे केस में है, यू मेक अ न्यू रूल, यू मेक अ न्यू रूल. तो अभी मैं खेलूंगी पंजाब यूनिवर्सिटी से लेने, मैं नहीं खेलती. नाउ दे वांटेड टू विन एट पंजाब यूनिवर्सिटी टाइटल, दे वांटेड मी, सो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी दी, उधर पढ़ाई की भी दी. सो ऐसे यू हैव टू ट्रेन देम. जाओ चैलेंज करो, जाके सीखो, जाओ करके देखो, हम है ना पीछे तुम्हें गाइड करने के लिए, लेकिन करो आप हिम्मत. यू गो, यू चैलेंज, यू थिंक, यू प्लान, यू मेक द एफर्ट. सो अनलेस यू मेक देम चैलेंज, और छोटी उम्र में नहीं करोगे तो वो डिपेंडेंस हो जाती है. फिर हर चीज कंफर्टेबल है और जब भी कोई एडवर्सिटी आएगी उसका बैलेंस नहीं है, उसने इमोशनली हार नहीं सीखी. सो हारो भी, लेट देम अर्न by effort. Effort rather than effortless. Don't make them effortless, make them based on effort. I heard you saying somewhere कि जहां साधन है वहां सदुपयोग भी बहुत आवश्यक है.
relating this to the Atmanirbhar Bharat and Skill India campaign. So it correlates so much to that कि you know हम शुरू से बच्चों को ऐसे बनाए, don't give them everything on the silver spoon, you know. Yeah. Let them earn their. So Yeah, pocket money is also and Exactly. saving भी पहले सिखाओ, financial management भी early सिखाओ. अगर घर में abundance है, कोई बात नहीं, ये मम्मी डैडी की कमाई है, तुमने नहीं अभी कमाया, तुम Very कमाओ तो तुम्हें पॉकेट मनी ये मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं. You live within your means, और इस पॉकेट मनी से 10% you will save in your bank account. You will use only 90%. See, so if we can, rather than अलमारी खुली है, जा बेटा ले ला, जितना चाहिए ले जा, we are spoiling the child. Yes, yes, very true. बड़ा होके वो नहीं समझेगा इसकी value. Correct. There are 3 life-changing M's according to, I mean, what I feel for a woman, which are like, first is the marriage, तो थोड़े वहाँ कट गए. Then comes motherhood, थोड़े और कट गए. फिर then if there is money dependence, बिल्कुल ही you're gone. Yes. So what do you think, isn't it important that our family systems, our families and friends and so are they are our support systems ना? तो बहुत सारी किरण's dream करके किरण बेदीज बन सकती हैं if the family support systems are in the right place. What do you suggest? Like, because you know we are noticing that लड़कियों को तो हम empower कर रहे हैं आजकल. They are empowered, they are independent, they are educated, but are we doing enough to make the boys good husbands, good fathers, good brothers? A lot of crime rate. What would you shed light on this, ma'am? That's a very crux of the problem today. While we are empowering our daughters and we are training them to become professionally self-reliant, we are not training our boys to deal with empowered women. How do they live with empowered women? ये नहीं हम सिखा रहे. हम चाहते हैं कि वो सीख MBA से शादी करे, highly qualified, corporate में भी इतना काम करे. लेकिन have we trained him how to respect and accept an empowered woman? Empowered woman cannot be boxed to continue with the traditional roles. Of course, she'll be a mother, but the choice will have to be hers. Important choice will be hers. When does her career permit her to become a mother? It's her decision more. The reason is not that it's not father's decision, but it's more a mother's decision. When should she choose to be a mother? Because she has it's a corporate ladder. And she could say, well, we can try out and experiment. Let my motherhood year would be 3 years away or 4 years away when I would be at the cusp of some work. But question is, when she becomes the mother, where is the plan for motherhood? She would need support system. Yeah. She's now dependent. Yeah. She's physically dependent. For the first time in her life, economically independent, but now physically dependent as a mother. Why? Because maternity, childhood, if she's a cesarean case, she has a longer medically. Yeah. And if the child is not born healthy, she's into trouble, right? And if the child is sick and there's nobody else, she's into trouble. Very true. Have we trained? Have we looked ahead what motherhood means? So the question is, who is the support system? Have we planned? हम बाकी चीजें plan कर ले. Where's the planning for motherhood? Yeah. Where motherhood means support system. Yeah. Where's the mother or the mother-in-law? If there's neither the mother supporting you nor mother-in-law supporting you, then is there other support system which is available in society, credible, who can be a good nanny you pay and that woman can help you? Yeah. Yes or no? Where's the planning? There's no planning, and you are become a mother, and now you look at mommy, संभालो, नानी संभालो. वो कहीं मैं तो खुद भी काम पे हूँ, यानी मैं तो अमेरिका में हूँ, मैं कैसे आऊंगी? तो आपने पहले मदरहुड के साथ अपने हस्बैंड के साथ sit down and talk. Very Talk true. to family. You want me to be a mother? Then I need next 3 years minimum of help, 4 years of help, because the child care would need 3 to 4 years of the immediate mother. That is how they will have to divide 2 years by husband, 2 years by woman, because they both are in corporate world. So have they thought through this? Have they talked about it? This is exactly what's happening in South Korea. This is exactly happening in Germany. This is exactly happening in Japan, where replacement is not happening, because the woman is also saying,
where there's no plan, I can't. I have no mother, I have no father, I have no relative, I To do look not after have the community. This is exactly what Indira Nui also said. Unless Yeah. we bring in community support. Now, in community support, which we had extended families and community support, the mother could rely. But today the mother is also outside the home. So therefore, you need a lot of support, social services, trained child care specialists, where they can be brought in to look after. And now this is residential, by the way. Mhm. She cannot just come and go. Yeah. It's residential, which means the housing doesn't permit. Where do you house her? What place does she sleep? Our houses do not build rooms for social support or home support. Very few have a servant quarters upstairs. Where's the nanny support? Is there a nanny support room? We've never built a house for a nanny support. Yeah. Or we don't even build, this is my mother's home, my mother care, or this is my relative, this is my guest room. But the guest room goes to if the mother and father, so you dedicate a guest room. I think we need to also build our houses differently, because these are now, because the woman is outside the home. So architecturally, we may look at a 2-floor houses or another floor where parents, whoever is coming for family support, also has space of their own space and own dignity. See, you need house care, you need housekeeping, because a motherhood is a biggest challenge for the woman who's working. Unless she wants to give up work. She wants to give up work, she's happy only being a mother, then it's her choice. But No that problem. choice should be hers. Yeah. The choice should be hers. But remember, in that case, she will be financially dependent. Unless she's built a nice corpus of her own self to even take care of this child. Even child के लिए वो मांगेगी पर पैसे कि मुझे child को the child is an expense. Bringing up child has a cost. There's a financial cost, there's a mental cost, there's a physical cost. Child care for a woman is at a huge cost, and it's more her cost. Father will come and go because the father are not oriented in child care. Yeah. We are not orienting our boys rearing in child care. Yeah. They don't even think this is their job. They don't even think this is their responsibility. उनके अभी तक thinking में नहीं आ रही है, because they're not in joint families now. They are in very nuclear families where they're not seeing all this. So this is a very big challenge. That is the reason Japan, South Korea, Germany, and other countries are aging. China also is. Even China, despite giving all this incentives, the women are not producing children. They want to go. They ask them to produce more child. They said no. They're not looking at. They're not looking at financial incentives. Correct. Then another thing, what is important is, once your child has become 4-year-old, where does he go? He goes to a school. The school system finishes by afternoon. ये पुराने जमाने का है कि जिसका स्कूल दोपहर को खत्म हो जाता था क्योंकि मम्मी is at home. अब तो मम्मी is not at home. हमारे schools day boarding क्यों नहीं बने अभी तक? Why don't we have very good day boarding schools for working mothers, working parents, not mothers, working parents? There may be a single parent father also. Where is so child needs daycare. So that means once the mother and father go to work, the child goes to a day boarding school, and there the day boarding takes care, and the mother picks her up, father picks the child up after work. And no bag. Please bring no bag. Homework is done. Now the child is going to home to be with parents. And the parents are also at home, and not the father is out for dinner or the mother is out for dinner appointments. No dinner appointments. That's family time. Once you get into this kind of a discipline where there's a family time, it's dinner time, and the child is part of that, and there's no homework tension. So homework kar liya, nahi mujhe ye nahi aaya. Because the day boarding school, you finish your homework, you played a game, you learn some music. So you are into a day boarding school. How many day boarding schools we have? Why can't we have day boarding schools? Why should the schools not go on till 6 p.m. at least, and let the working woman say, thank you, I've now got to go home at 6, I've got to pick up my child. Not this child to be picked up at 1 o'clock, 2 o'clock. I come from office, I pick up the child, I drop the child, and then I go to office. The society has not given these solutions to working mothers at all. That's which brings me to your concept of school ke baad school jo aapne introduce kiya. Yeah. So it is, of course, it is for the underprivileged children that you started more. But of course, the purpose
more or less is the same. Maybe their financial things are different. But so while on this, आप अपना NGO के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए, and also how from here we can be a part of it. If anybody wants to, किसी को जुड़ना है, किस तरह से जुड़े? वो आप इस वक्त उजाला भी बैठी है. नवज्योति इंडिया फाउंडेशन was set up in 1986. Yeah, it's been rare serving officer जिसने एक सोसाइटी बना दी NGO की. I was सर्विंग ऑफिसर. कभी इंडिया में सर्विंग ऑफिसर सोसाइटी नहीं बना था. हम लोग सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स मिलके और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट बनाया और हमने सोसाइटी बना दी. किस लिए? क्राइम प्रिवेंशन के लिए. लेकिन वो क्राइम प्रिवेंशन जिसी को जो बच्चे क्राइम करते थे, नशा बेचते थे, उनको स्कूल भेजा. औरतें जो नशा बेचती थी उनको सिलाई केंद्रों में भेजा, काम दिया. धीरे धीरे वो हट गए, क्राइम से हट गए. नशा मुक्ति केंद्र खोला, वो भी हट गए. धीरे धीरे ये संस्था ग्रो करती गई और जरूरत के अनुसार वो बढ़ती गई. जैसे जैसे एरिया में जरूरत पड़ी, अब उसकी हम उस ओर ये चले गए. और हम लोगों ने फिर स्कूल के बाद स्कूल क्यों खोला? क्योंकि जो सरकारी स्कूल था वो बड़ा कमजोर था और उसकी पढ़ाई वो 6th स्टैंडर्ड में, उसको 2nd स्टैंडर्ड का भी अभी काम नहीं आता है, लेकिन फेल हो ही जा रहा है. तो हमने फिर उनके स्कूल के बाद स्कूल खोला. वो अच्छा ठीक है, सरकारी स्कूल तो माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा ना सरकारी स्कूल में होना चाहिए. हो गया, अब तू इधर आ जा, अब पढ़ आके. तो हम लोग उसकी क्लास 2nd की लगाते, 3rd स्टैंडर्ड लगाते, 4th स्टैंडर्ड लगाते. तू पहले जो पढ़ रहा है वो भी पढ़, पिछला भी रिविजन कर. तो ऐसे स्कूल के बाद स्कूल हर बच्चे. अब इसकी कॉस्ट होती है ना. That is how नवज्योति start to get children sponsored. So हर बच्चे को स्पॉन्सर किया. और दुबई में तो उजाला काफी ट्रैवल करती है, दुबई में आएगी तो आपको मिलेगी. तो हमने ये स्पॉन्सरशिप कर करके बच्चों को हमने संस्था चलाई. और आज हमारे बहुत सारे वो स्कूल के बाद स्कूल वाले ही टीचर है. क्योंकि मैंने बताया ना 1988 से ये संस्था है. आज 2023 हो गई. उसके बाद ये बढ़ती गई स्किल डेवलपमेंट. आज ये बच्चे कंप्यूटर हो गए, IT ओरिएंटेड हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, रोबोट्स की भी ट्रेनिंग लेते हैं. डेल जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम करती है और बहुत सारी संस्थाएं. जब उजाला आपसे बात करेगी तो आपको बताएगी और आपको आपकी सारी संस्था को प्रेजेंटेशन भी दे सकती है कि नवज्योति क्या करती है. श्योर. आपको अब मैं जोड़ना चाहती हूँ सभी को पानी के साथ, क्योंकि अब हमारा जो रूरल प्रोजेक्ट है, आज जरूरत स्किल डेवलपमेंट होगी, स्किल शुरू हो गई, हम कर पा रहे हैं. पढ़ाई स्कूल के बाद पढ़ाई भी हो गई हमारी, वो भी चल रही है. अब हमारा हर गांव में सुखाड़ है. गुड़गांव में इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई कि वो पानी एक्सट्रैक्ट करते करते रिप्लेनिश नहीं किया उतना. अब हम रिप्लेनिशमेंट में है ताकि औरत को पानी मिले, नहीं तो वो दूर तक जाती है और घर फंस जाती है. उसकी सैनिटेशन पे भी इफेक्ट होता है, मोबिलिटी उसकी इसी में सारा दिन एनर्जी लग जाती है. तो अब हम गांव गांव में सोच रहे हैं कि आप लोगों आपको गिवर्स को गांव गांव में जोड़े और गांव में पंचायत के थ्रू हम काम करें और गवर्नमेंट के थ्रू काम करें साथ में मिलके, ताकि हम लोग पॉन्ड्स को करें या कहीं लेक बनानी है तो लेक बनाए, कहीं पेड़ खूब सारे पेड़ लगाए. तो वो गांव वाइज वी कैन हैव अ मूवमेंट तनु that how many of them would adopt 1 village, 2 villages, and we can have work with panchayats. That means when you come, we introduce you to the panchayats and make you meet the panchayats, and we can tell them, देखो ये गांव तनु का है, ये तनु सपोर्ट कर रही है, इसमें पानी का ये काम करिए. हम कराएंगे काम पंचायत से, हम उसकी मेंटरिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज है, प्रोफेशनल स्किल है. और हमारी लड़की चांदनी बेदी, हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस रूरल प्रोजेक्ट, वो हमारी शी इज ऑलरेडी डूइंग अ PhD फ्रॉम टेरी. शी इज वेरी गुड इन वाटर मैनेजमेंट. एंड हमने गेबियन स्ट्रक्चर्स भी बड़े बनाए, हमने बहुत सारे तालाब बना चुके हैं. हम ऑलरेडी नवज्योति इज वन ऑफ द 4 बेस्ट NGOs in water harvesting programs in India today. So people are coming to Navjyoti now for support in water harvesting. So we are now trying to say Gurgaon water rich or that village water rich, and link it with the sponsors like individuals like you, and then get them adopted, village wise adopted. So that village wise अपना अपना हर गांव में पंचायत तो है ना, उस गांव में विमेन है, उस गांव में विमेन लीडरशिप है, कहीं महिला सरपंच है, हम उसको आगे लगाएंगे और उसके पीछे उसका अपना एक्सपर्टीज डालेंगे. और उसकी जो कॉस्ट है, मेंटरिंग कॉस्ट है, पेड़ लगाने की कॉस्ट है, तालाब की करने की कॉस्ट है, श्रमदान की मोबिलाइजेशन की कॉस्ट है, इंसेंटिव की कॉस्ट है, रिकग्निशन की कॉस्ट है.
वो हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेने की कॉस्ट है श्रमदान करने के लिए. दैट इज वाई विलेज वाइज वी कैन हैव एन आइडिया किस विलेज को क्या चाहिए. वर्क विद द गवर्नमेंट, वर्क विद वुमेन सरपंच एंड कॉल इट द women leadership in water. So women ahead. हमारे पास है ना इंडिया में, आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 तो पंचायत मेंबर्स विमेन है. दूसरा हमारे पास महिला मंडल है हर गांव में, और कई जगह गांव की सरपंच भी है. तो क्यों नहीं हम ये एक मूवमेंट चलाएं, women behind women, women empowering women in water, women empowering women in water. You can have 3Ws, women empowering women for water. The 3W program we can have. और आपके पास तो सोशल मीडिया सपोर्ट भी बहुत सारा है. You are wonderful on that. You have 14 million plus on Twitter and many more everywhere. Like so we can have literally women, right? We empowering. We literally have women in women water. So I think we can empower this program, and this is how you people, you women from India, can work with villages, and Ujala can fly in and meet you also. In fact, if you want, I'll ask her to visit you in Dubai, meet you all, and show you this village concept which we are developing, and empower, which means, see, जैसे हमने पढ़ा के लोगों को टीचर बना दिया, अब हम पानी दे के गुड़गांव को रिच बना सकते हैं, बचा लेंगे ड्राउट से, और वहां पर करोड़ों लोग रहते हैं. It will become a great movement. We can make this into a real movement. Ujala, you want to say something? Ujala, can you come up? Ujala, can you please bring Ujala up? Divya, can you put a spotlight on Ujala? Greetings. Thank you very much. आई थिंक हम लोग बहुत ही नवज्योति में और इंडिया विजन में बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमें मैम के साथ काम करने का मौका मिलता है. एंड थैंक यू फॉर गिविंग मैम दिस अपॉर्चुनिटी. मैं हर साल दुबई आती हूँ, मेरा दुबई आना भी ड्यू भी है, तो ये बहुत राइट टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज हम लोग मिले हैं. मैं दो बातें बोलना चाहूंगी मैम यहाँ पे सबके साथ, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की दो मेन फिलॉसफीज हैं. नंबर 1, वी वर्क ऑन सेल्फ रिलायंस, यानी हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी कम्युनिटी और बेनिफिशरीज को एम्पावर करते हैं बाय मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट, whether it is education, whether it is skills, whether it is water or any project which we undertake. तो वो हमारा एक मोटो है. सेकंड है, जैसे मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चों को भी हर चीज हमें प्लेटर पे नहीं देनी है. सिमिलरली जब हम अपने गांव में काम कर रहे थे तो हमें ये बात समझ आ गई थी, वी अंडरस्टूड कि सिर्फ स्ट्रक्चर्स बना देना कॉर्पोरेट की मदद से या किसी एम्बेसी की मदद से वो इनफ नहीं है. हमें पूरी कम्युनिटी को एम्पावर करना है और उनको उस पूरा जिम्मेदारी देनी है कि इवेंचुअली उन्हीं को अपने गांव का ध्यान रखना है और वाटर रिच गांव बनाना है. तो इसी मकसद से हमने पानी पुलिस भी बनाई थी और बनाई है. पानी पुलिस बनाई है, जो औरतें हैं वो अपने कम्युनिटी में, क्योंकि वो वहीं पे रहती हैं, एंड हु बेटर देन देम एज ब्रांड एम्बेसडर्स हु वर देमसेल्व्स saved from drowning at some point in time. क्योंकि जब वो हमारे पास काम कर रही थी तो 2003 में हमने देखा, जब हम इनको अपने सेंटर पे बुलाते थे नया गांव में भौंडसी पे जहाँ पे हमारा सेंटर है, तो वो आना तो चाहती थी कुछ चीज सीखने के लिए, बट वो आ नहीं पाती थी क्योंकि पानी की किल्लत थी, पानी की कमी थी. तब हम पानी में घुसे कि जब हम ये कहते हैं कि हम एम्पावर कर रहे हैं कम्युनिटीज को, और अगर पानी जैसी बेसिक चीज को ही हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो वो एम्पावरमेंट नहीं है, चाहे वो लेडीज के लिए है चाहे वो बच्चों के लिए है. क्योंकि जब हम स्कूल्स में भी काम कर रहे थे तो पूरा एक स्ट्रक्चर है स्कूल का, लेकिन हमने देखा कन्या पाठशाला गांव में है, लेकिन हमने क्या नोट करा, वहां पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है. क्योंकि पानी की किल्लत थी तो बच्चियां जब अपने घर जाती थी तो वो वापस नहीं आती थी, क्योंकि पानी पीने जाती थी और उनके माँ बाप कहते थे नहीं बच्चों को संभालो, हम बाकी चीजें करो. पर जब हमने पानी की सोलर पैनल्स लगाए, वाटर बूस्टर लगाए, पानी की समस्या को हमने जब दूर करा, तो वही स्कूल्स में जो अटेंडेंस परसेंटेज 30% थी, आज की डेट में वो 90% हो गई है. तो ये एम्पावरमेंट कंप्लीट तभी होती है जब पानी के ऊपर आप पूरा काम करते हैं और एंड टू एंड सोल्यूशन निकालते हैं. सो मैं दुबई जरूर आऊंगी, बट क्योंकि आज मौका मिला है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो गुरुग्राम एरिया जहां पे हम काम करते हैं, इट इज वन ऑफ द सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स
in the state of Haryana, which faces major challenges with declining per capita water availability today and stands gravely stressed with rising water demand. So इस वजह से पानी की जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है. हमने एक गांव भी आइडेंटिफाई करा है जिसका नाम है अलीपुर. अलीपुर में महिला सरपंच हैं जिनका नाम है पूनम. और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी. जब हमने दमदमा गांव में काम किया, वहां पे लेडी सरपंच थी. हम बहुत माइंडफुल हैं. वी एट नवज्योति इंडिया फाउंडेशन are absolutely mindful of the fact that it's everybody's hard earned money. And चाहे वो कॉर्पोरेट है, एम्बेसी है, HNIs हैं, आप जैसे महिलाएं हैं, ये हार्ड अर्न मनी है. तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि पैसे लिए और बस स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया या प्रोजेक्ट बना लिया. वो हमारा मकसद नहीं है. हमारा मकसद ये भी है कि जहां पे गवर्नमेंट के फंड्स हैं और हमारी महिलाओं को या सरपंच को या पंचायत को या यूथ क्लब को ये पता नहीं है कि इस चीज को या पॉन्ड को रिवाइव करने के लिए ऑलरेडी फंड्स पड़े हुए हैं. वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम कैटलिस्ट. हम कैटलिस्ट बनते हैं. हम उनको कनेक्ट कराते हैं, हम उनको ग्रूम करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं. हमने दमदमा में यही किया कुछ साल पहले. वहां पे लेडी सरपंच थी. हमने उसको बोला कि चंडीगढ़ में जाओ, आपके वहां पे पैसे हैं आपके पॉन्ड को रिवाइव करने के लिए. तो कोई मतलब नहीं बन रहा था कि मैं कॉर्पोरेट में जाऊं और पैसे लूं, जबकि सरकार के पास वो पैसे पड़े हैं. So why waste hard-earned money of all of you or corporates? We rather became catalyst and we groomed her and we trained her. She went to Chandigarh. आप मानेंगे नहीं, उसने 30 लाख का प्रोजेक्ट सैंक्शन जो था वहां पे वो लेकर आई और उसने दमदमा जो लेक थी उसको रिवाइव किया. हम यही करना चाहते हैं. So ये जो Radha, गवर्नमेंट, when you're here, we will discuss this and Yes. at length maybe. But Excellent. अभी Yes. मुझे टाइमर दिखा रहे हैं, सब लोग मुझे आंख दिखा रहे हैं. मैम चले जाएंगे, मैम चले जाएंगे, बहुत चीजें बातें करनी है. कोई नहीं. तो मैं आपको बस ये कह रही थी, जब मैं आऊंगी तो मैं आपके पास लेके आऊंगी. हमें एज अ ग्रुप मिलके बिल्कुल. काम करना है. और Perfect. मेरी रिक्वेस्ट है कि हमने ऑलरेडी गांव आइडेंटिफाई किया है और हम लोग मिलके उस पर काम करें और ये ग्रुप हमारे साथ जुड़े ताकि हम आगे मिलके काम कर सकें इसके And ऊपर. as James, Thank you. we really respect water a lot anyways. Yes. तो पानी का बहुत अच्छे से उसको यत्ना बोलते हैं, वो करते हैं, कोशिश करते हैं जितना कम यूज हो, जितना मैक्सिमम उसका ऑप्टिमम यूज हो. बिल्कुल. मुझे ये जानना था कि like I know on my research we got to know that there is a T theory that you say that you become trustworthy, you empower people and then you make yourself accountable. और मुझे पता है आपको लॉपचू चाय पसंद है. So that, what is this your लॉपचू मंत्र? Yes, Lapchu was my favorite of my father. Since then, I only take Lapchu tea, brew Yeah. tea. That's Yeah. it. But the tea is a mantra which you can use in your administration and your I'm government. giving a giveaway to all the people here. One secret about you, which maybe they didn't know otherwise. बाकी right. तो बहुत कुछ नेट पे है आपके बारे में. You're so right. I take You only love Lapchu. लॉपचू टी. तुमने तो मुझे रूट तक रिसर्च कर लिया लगता है. You went हाँ. into और आपकी ये ड्रेसिंग, मुझे पर्सनली आई लाइक दिस ड्रेसिंग. बट कभी आपको ऐसे यू नेवर हैड अ फीलिंग ऑफ ग्लैमर ड्रेसिंग या वो गर्ली वाली शौक, ऐसे ज्वेलरी मेकअप, तो कभी आया नहीं दिल में? इतना ब्यूटीफुल ड्रेस है ये. नहीं, ये तो बहुत सुंदर है. मैं बोल रही हूँ, मैं आई वाज गोना वेयर समथिंग सिमिलर बट देन आई थॉट नहीं ऐसा ही ठीक है. मैं See, मेरे माहौल में ये ड्रेस इतना काम आया है, you won't believe it. मेरे माहौल में क्यों, where I work with men all the time. Yeah. So उनकी नजर कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकती. That's a cue for all the girls who are ready to slip out any which ways these days. So I've given no choice to anybody. Correct. Focus on me, what I want. I know. Finally, मैम एक चीज है, हम बॉलीवुड के बिना कुछ भी एंड होता नहीं है इंडिया में. माँ और सिनेमा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन अ ट्रू बॉलीवुड स्टाइल आई वुड लाइक टू आस्क यू, किरण को किसी चीज से डर लगता है क्या? मुझे लगता नहीं ऐसा लगता है, लेकिन आई वांट टू आस्क यू फिर भी. डर लगना चाहिए. किसी भी चीज नहीं, डर तो लगना चाहिए. भगवान से डरना चाहिए. That is of course. कुदरत से डरना चाहिए कि पता नहीं कुदरत आपको कहाँ ले जाए. कुदरत से डरना चाहिए. सो मैं समझती हूँ कुदरत से डरो और उसका धन्यवाद भी करो कि आज अब तक जो दिया शुक्र है.
और डरो भी कि कल को अगर कोई मैं कुछ ऐसी चीज होती है तो मुझे काबिल बनाना, ताकि मैं उसको संभाल सकूं। तो कई चीजें आपके हाथ में है ही नहीं। क्या हो जाए कल, वो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए मालूम नहीं है मुझे। सो मेरा समझती कुदरत से डरना भी है और कुदरत का शुक्र भी करना है कि जो दिया शुक्र है, बनाए रखना। और जब तक तू मुझे ऊपर नहीं बुलाए, मुझे सेल्फ रिलायंट रखना। मेरी तो यही प्रार्थना है कि बिफोर, because at 73 it is commendable at 73 the way you are on social media. Till the last day I leave, God, keep me self-reliant. Don't make me dependent. Definitely. Don't We give also me wish time. the same. Give We me also health. wish the same. Give me health and self-reliance. Don't give me wealth. Wealth की इस वक्त नहीं, जो देना है काफी है. I have enough to survive till the last day of self-reliance, because I'm a government employee. I get a very good pension. I have my own home. It's God's grace. इसलिए मैं डरती हूँ भगवान से कि डरो, शुक्र भी करो और डरो ये कि मुझे dependent बताना, which means physical dependence. Yes. Because that is not in your hands. I should do my best, nutrition myself, look after mentally, physically, spiritually. Despite that, things can happen which are not in your control. Very true. Very true. You're fearless, ma'am. Needless to say, I mean, हमेशा पता था, but आज अपने आंखों के साथ, it's one of my bucket list. आज टिक हो जाएगा. आज मेरी bucket list थोड़ी सी हल्की हो जाएगी. How sweet of you. So you're fearless. शुक्र भी करो और वर्तमान में रहो. हाँ, बिल्कुल. I think we have a lot of people waiting in the chat box के साथ में questions के साथ होंगे. So we have 2 people from our team who will compile those questions and ask you. So over to them now. And for me, I'm like gratified today. You're courageous. आप morally इतनी high grounded हैं. My salutes to you. I'll show you your plant, which is in very good position. You asked me, what can you send? I said, send me. I know. Remember? Yeah. So आपको अच्छा लगा. Rinki told me you love this. I love plants. In fact, आप कभी फूल मत दिया करो, plants दिया करो एक दूसरे को. Yes. This is your plant. Thank you. Ladies and gentlemen, we had sent this to her as a token of appreciation from our side. इसकी फोटो खींचो. I'm getting it photographed. Take a photograph of the screenshot so that you get it. So sweet of you. So sweet of you. See, this is your gift. And see, I asked for a plant. Yeah. Because नवज्योति में हम यही करते हैं. किसी को फूल नहीं देते. अपनी जमीन का उगाया हुआ प्लांट देते हैं. And that is why मेरे को भी जिगरा आ गया था पूछने के लिए. मैं पूछ लेती हूँ. It's okay. See, and it's on my table and it's got legs. You see this? It has a stand underneath. Yeah, it has legs and it's on my, and I just love it. Thank you so much. I've got a screenshot of this, Tanu. Yeah, thank you so much. Can we have a screenshot of this? Yeah, okay, she took it. Thank you so much. I will now give this to my team, Divya, and she will take it from there. Divya, Thank you, Tanu. Yeah. Thank you so much. Very nice. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Kiran ji, we all have huge respect for you. एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में. At the age of 73, how do you maintain your physical and mental health so well? How can we develop mental strength like you? Very difficult question to answer. How do you do mental strength? देखो, it's a holy. अच्छा ऐसे है. The point is, how do you groom yourself? Well, let's talk about physical strength. दिनचर्या की बात है. जितने पैशनेट होंगे आप अपनी हेल्थ फिटनेस की, उतनी जरूर एक्सरसाइज करोगे. मिस नहीं करोगे. चाहे योगा का करो, चाहे वॉकिंग करो, कुछ ना कुछ जरूर करोगे. So if you are conscious and you want to earn your food, भूख कैसे लगेगी अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया? मैं तो खाना खाने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ. और अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, मैं अपनी हाउसकीपर को कह देती हूँ, वेट कर, थोड़ी क्रॉस ट्रेनर पे आधा घंटा मैं कर लूं, फिर खाना खाऊंगी. So I always earn my food. Without appetite, you never enjoy your food. तो मुझे खाना को enjoy करना है, तो मुझे fitness तो करनी पड़ेगी. Number one, how do you maintain mental strength? Mental strength is by constantly awareness. Constant awareness of what's going on in my mind. It's awareness. It's learning to watch your own self. Being your self-witness.
unless one is a self-witness, the mind will get crowded up. You know what? You have inner eyes. All of us के पास, हमारे पास अंदर आंखें हैं. हम जब ना भी बंद करो आंखें, तो भी जब सोचते हो, क्या सोच रहे हो? कोई वीकनेस सोच रहे हो, कोई कमजोरी सोच रहे हो, कोई तनाव सोच रहे हो, ऑब्जर्व इट. तो क्या करना उसको? ऑब्जर्व करके उसका सोल्यूशन ढूंढना, ना कि उसको खाना देना. अपनी वरी को कभी, डोंट वरी द वरी, डोंट फीड योर वरी, डोंट फीड योर वरी, एनालाइज योर वरी and get into action rather than punish yourself, suffer the pain. So try and find what is worrying you, dissect it, and don't continue the worry. Do not worry the worry. Do not feed the worry. Analyze the worry and seek solution. अब solutions कहाँ है? कभी किसी किताब में solution मिलेगा, कभी किसी प्रोग्राम में मिलेगा, कभी सत्संग से मिलेगा, कभी प्रार्थना से मिलेगा, कभी क्लीनिंग एक्सरसाइज से ही मिल जाएगा, पता नहीं कहाँ सोल्यूशन. कभी किसी के साथ बात करने से ही सोल्यूशन मिल जाएगा. सो यू नेवर नो वेयर योर सोल्यूशन इज. कीप योर माइंड ओपन, बट नो आई एम लुकिंग फॉर, सो लुक फॉर सोल्यूशन. शिकायत करनी बंद कर दो, फोकस करो सोल्यूशंस पे. जितना इस पर ध्यान दोगे उतनी मेंटल स्ट्रेंथ बनेगी. लेकिन ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है. जब आप अंदर को पहचानने लग जाते हो, तुम अपनी कॉन्शियस से बात कर रहे हो. यू आर लिंकिंग योर सेल्फ विद द स्पिरिट विद इन. क्योंकि जो हमारे पास अंदर जीवन है ना, ये एक स्पिरिट है. दिस इज स्पिरिट विच इज अलाइव. द डे द स्पिरिट गोज, वी आर डेड. इट इज द स्पिरिट, द स्पार्क अलाइव. दैट मीन्स समटाइम्स गो विद इन एंड थैंक द स्पार्क विद इन. उसको आप नाम, भगवान का नाम दे दो, ना दे दो, आपकी मर्जी. लेकिन इट इज द स्पिरिट विद इन. सो इट्स फिजिकल दिनचर्या, and it's mind watch, being a witness, and third is the please speak and be with the spirit within and thank it. You can call it God, you can call it prayer, you can call it Allah, you can call it anything you want. Beautiful answer. And it's practiced. Remember, it's a practice. You have to practice this. मैंने भी इसको सीखा है, ये मेरा नहीं है, मैं भी सीखा है. ये क्लैरिटी जो है मैं भी सीखी है. So, सीखने से आप दूसरे को सिखा सकते हो. थैंक यू दिव्या. किरण जी, आपने बताया कि आप हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज में टॉपर थे, पर आपने ये नहीं बताया आपने कब मन बनाया आप पुलिस में जाएंगे, पुलिस ऑफिसर बनेंगे. हाउ इट टर्न आउट टू बी? आई थिंक क्वाइट अर्ली से, जब मेरे पापा के पास लोग हेल्प मांगने आते थे, एंड दे वर इन नीड ऑफ पुलिस हेल्प, तो मैं समझ गई ये डिपार्टमेंट जो सॉल्यूशंस देता है, ये डिपार्टमेंट जो सुरक्षा देता है, ये एम्पावर्ड है, फटाफट देता है, वेट नहीं करता. कचहरी की बात में पहले तो मैं गिरफ्तारी कर लूं, वो सॉल्यूशन मिल गया, या उसको ठकाऊं या उसकी हेल्प करूं. सो आई थिंक आई फाइंड दिस इज वन डिपार्टमेंट इज लाइक अ डॉक्टर. इट्स लाइक अ डॉक्टर इन यूनिफॉर्म. दैट्स व्हाई बोथ वेयर अ यूनिफॉर्म. Doctor wears white, I wore a khaki. But it requires a lot of courage, right? I mean, to be a doctor and to be a police officer. And at that time. Why not? If you daily do your homework, it requires courage. You learn a language not overnight. Because now also still women cannot achieve that mindset. But why not? What are the parents for? What are the teachers for? The ball is in the court of parenting. Ball is in the court of teaching. And then you absorb it alongside. आपको मेंटर्स चाहिए ना उस वक्त, इसीलिए तो पेरेंट्स होते हैं, इसीलिए आपका स्कूल होता है. सीधा ही थोड़ी कॉलेज में जाते हो. और एक थोड़ा सा समय है तो और एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछो. What is core learning in the whole journey of your life? What would you like to share? अभी आपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बता दिया. अभी आपकी लाइफ में से जो लर्निंग हमें सीखनी है. अपने समय की कदर करो. समय बहुत बहुत महंगा है. जो इंसान समय की कदर करता है वही समय उसकी कदर करता है. मैंने अपने समय की बहुत कदर की है, ये सही बात है. मैंने कोई दिन ऐसे जाने नहीं दिया. मैं हर क्षण कुछ ना कुछ सीखती हूँ, करती हूँ या करवाती हूँ, डिपेंड करता है. लेकिन मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, और वो इसीलिए रीजन है क्योंकि मैं समय की कदर करती हूँ.
सो समय की कदर जो करता है, समय उसकी कदर करता है। तो मैं अभी आज जो भी हूँ, ये सब समय की कदर। आपको पता है नवज्योति में जब मैंने संस्था बनाई थी, मैं 24 घंटे की काम में डीसीपी थी। सिर्फ संडे मिलता था, हाफ संडे मुझे रेस्ट के लिए, मैं हाफ नवज्योति को देती थी। जगह जगह जाती थी, नशा मुक्ति केंद्र में और फलाना जगह, ताकि मैं इसकी सेवा कर सकूं। और पता नहीं कहाँ से टाइम निकालती थी संस्था को खड़ा करने के लिए, और पता नहीं होती रही। ये सिर्फ समय की कदर से। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। ये ईश्वर की कृपा थी, ये कुदरत की कृपा थी कि मेरी माँ मेरे घर में थी। मैं अपनी माँ की मेहनत की फल हूं। मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया। माँ ने मेरा सब कुछ किया। हर एक वर्किंग मदर को माँ चाहिए, चाहे उसको मदर इन लॉ चाहिए मिलके या मदर मिलके, उसको कोई ना कोई मदर चाहिए। इसलिए ये जॉइंट फैमिली, अलग अलग फैमिली न्यूक्लियर मत करो, इकट्ठे रहो, प्यार करो, एक दूसरे के सहायक बनो। अब अकेले रहने की उम्र नहीं है। हम सोचते हैं मैं अकेले रहूं, जवानी चली जाएगी, फिर क्या करोगे? जवानी के बाद क्या करो? सो इसलिए मेरे ख्याल में हमको न्यूक्लियर होने के बदले कम्युनिटी ओरिएंटेशन ज्यादा चाहिए इस वक्त। फैमिली और कम्युनिटी ओरिएंट, जिनके एक चाइल्ड हो गए, वी आर ऑल वन चाइल्ड फैमिलीज, व्हाट विल वी डू ऑल अलोन विद आवरसेल्व्स? मैंने एक घर खरीदा है, आपको पता है, कोयम्बटूर में, सीनियर सिटीजन होम, जहां डॉक्टर भी है, क्लीनर भी है, फूड भी है, सब कुछ है। मैंने अपने लिए अरेंजमेंट रखा है कि किसी दिन I have no support system at home in Delhi, I'll go to Coimbatore, where there is everything available. Gated community है, security भी है, सिर्फ 70 घर है, मैं उधर रह लूंगी, जहां मुझे घर भी बनाया, सफाई भी कोई कर लेगा, डॉक्टर ऑन कॉल भी है, योगा टीचर भी है, लाइब्रेरियन भी है। You look, because after all, there is nothing else left, finished. We have to prepare. But supposing I had many children, वो अपनी मेहनत तो मैं करती, लेकिन सवाल है, there's no family, there's no community living here. So now we are going to gated communities for community living. Why gated community? Because you need company. You cannot be alone. We all, so समय की कदर करो। जवानी ज्यादा देर नहीं चलती, उम्र टाइम कैच अप नहीं करता। एक दूसरे की कदर करो। पता नहीं कौन सी फ्रेंड, कौन सा रिश्तेदार, कौन सी जो आपके काम आएगा। This is what friends are for. So build friendships as family and live community living. इसलिए सत्संग बड़े अच्छे होते हैं। सत्संग अच्छा होना, जहाँ संगीत है, म्यूजिक है, it relaxes you also. Totally agree. Amazing. One more question, last question. आज की रियलिटी हो चुकी है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ बताओ। आप इतना एनजीओ और सोशल वर्क का काम करते हैं, तो व्हाट इज योर फेवरेट एक्टिविटी इन दैट? हाँ, मैं जब जाती हूँ तो खुशी मिलती है। हर प्रोजेक्ट में जाती हूँ, कभी बच्चे हंसते मिलते हैं, कभी स्टाफ अच्छा मिलता है, कभी पुराना मिलता है, कभी औरत खुश मिलती है, कोई डांस करती है, कोई गाना गाती है, कोई नाचती, मैं भी उनके साथ नाचती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उनके साथ नाचती हूँ। आप मुझे कहीं भी देख लो, जैसे मैं रूरल प्रोजेक्ट में जाती हूँ, अगर डांस हो रहा होता है तो मैं डांस करती हूँ। मैं उनके जैसे उनके साथ मिल जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत करीब है। मुझे खुशी देना और खुशी लेना बहुत अच्छा लगता है। मैं देती भी हूँ और लेती भी हूँ। मैं देती हूँ, अपने आप मिलती है। मैं लेने नहीं जाती, अपने आप मिलती है। तो इसलिए जहां पर भी जो हो, अगर दूसरे के काम आ रहे हो और उसका भला सोच रहे हो और निस्वार्थ हो, तो आपको तो खुशी मिलेगी। ये तो नियम है, कुदरत का नियम है। अगर मैंने संस्थाएं नहीं खोली होती तो मैं शायद इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती। इनफैक्ट इन यूनिफॉर्म, बीइंग एसोसिएटेड विद community causes like this actually humanizes you more and makes you remain closer to community more. And I've noticed the more you give, more God gives you. What does God give you? Joy, happiness, fulfillment, self-fulfillment. We are very thankful
Ragini Shah will do vote of thanks for you now. Okay, okay. I've loved talking to all of you. You're amazing family. Thank you so much. Thank you so much. I'm sure you will love meeting Ujala soon, and we will connect with family and meet you in Delhi. Yeah, definitely. Ma'am, thank you very much for your valuable time. On behalf of JITO Ladies Wing, Dubai chapter, and JITO family, I feel privileged to thank our extraordinary guest, Dr. Kiran Bedi. Ordinary. That's a word coined by me, Dr. Saab. वो मेरे को बहुत पसंद है ये word ऐसा मैंने बना दिया है. Lovely, बहुत बढ़िया नाम है ये. Thank you. Ordinary. The notice was short, ma'am, and your schedule was packed. But we were lucky to have your valuable insight on such an illustrious career and courageous life. Now, beautifully transcended to giving back to the society in a way of social services and activities. Ma'am, you will always be our inspiration, and I don't know what to say, ma'am, but I'm out of words. Thank you very much, ma'am, for gracing us. A special thanks to our annual sponsor, La Marquez. Thank you everyone for all your support and help, presence and participation to make this event a great success. Thank you. Dhanyawad. Good night. There's a certificate of appreciation जो हम बनाते हैं. There's a certificate of appreciation जो हम बनाते हैं. So we will have this sent to you as a soft copy. Electronically आपको मिलेगा ये. I will get it, no problem. But Tanu, let's once we all work together in whatever way we begin, I will pay you visit then. We'll celebrate it in Dubai. Definitely. I would love to see this celebration. So ab kaam karo, November, December May, when you're ready, there's an occasion. We will come. We will come as a team to attend your event and celebrate our togetherness. Let's do that. I will love to see you in Dubai, ma'am. Yes, I will come. But after we show you or we say, this is what we've done, our togetherness, ye magic hua. It's coming together, women power. So it's women power for water harvesting and working together. So let's celebrate and then continue with this relationship. It's one time. For sure. You have been amazing, Tanu. It's because I'm here because of you. The way you inspired me to be with you. I didn't know JITO, what JITO meant. मुझे लगता है वो डायलॉग है ना जहाँ शिद्दत होती है वहाँ अपने आप सारी कायनात मिलाने लग जाती है. वही हुआ है. You gave me a no. I was like, अरे कैसे? Then I said, कैसे भी करके, I don't know, शायद शिद्दत and my admiration for you won finally. And you have been so gracious and so generous in accepting that. So I think हमारा मिलना destined था. This is what I would say. बिल्कुल destined था, भगवान की कृपा से destined है और larger reason के लिए है और दूसरों को exactly. बिल्कुल. Thank you so much, ma'am. Because मुझे ऐसा लगा वही persuasion चलता रहा और हो गया काम हमारा. So I'm blessed. I'm feeling so blessed today. Thank you so much. My तंदुरुस्ती भगवान अच्छी दे, तंदुरुस्त रखे ताकि आप इस तरीके से celebrate करते रहें together. Thank you so much, ma'am. Sorry, I'm intervening here, Dr. Bedi, Dr. Kiranji. This is Biren Jasani, JITO Dubai chairman. I have heard every single word what you have spoken today. And I can only say I knew a lot about you, but I did not know everything about you. So now I know a lot more about you, which I never knew. This is one thing. Second, I'm amazed. I'm amazed that in the public sector or in government services or in bureaucracy, how you can achieve so much. In private sector, you get the lubrication to achieve, but here you have only frictions usually, and with those situations you have achieved this. Dr. Bedi, I can also tell you one thing. I'm associated with water and related to women, and please Ujala, please be in touch with me, and I'm definitely going to associate with you on this. So just we'll work it out on this. They have an office here. I mean, they have a representative here also. Sure. So, I am associated right now with water.org, which is US-based non-profit. I would like to shift my focus towards your institution, and I would like to support it definitely. Full marks, God's grace. ये इसको कहते हैं चमत्कार.
नहीं चमत्कार इसको आप कर कहते हैं रही है। आपका मैग्नेट, इसको दिस ईश्वर इज का योर मैग्नेट। चमत्कार इसको बोलते हैं वीरेन जी। चमत्कार आप कर रही है। नहीं, ये मुझे चमत्कार के लिए बुलाया तुम बहनों ने, तनु ने और बहनों ने बुलाया है। दिस इज चमत्कार एंड उजाला और मैं बोल रहे थे ये चमत्कार करना है हमको। I'm so happy to be associated, and we will be in touch and we'll take this forward. Apart from the entire JITO Dubai here wanting to take it forward in its own way, but from my side personally, I'll take this forward. Superb indeed. Thank you so much, Viren. Thank you. Looking Thank you. forward. Namaskar. Pranam. Let us celebrate this togetherness sometime in January, December, whatever you time. We can celebrate. We must. Absolutely. Your convenience, ma'am. Yeah. Your convenience. Anytime. Thank you. Thank you so much. Thank you. किरण जी एक वर्ड यहाँ पे सेंचुरी फाइनेंशियल्स है, वो भी शायद आपके साथ एसोसिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर वाटर प्रोजेक्ट। मैं मैनेजमेंट को भी वर्ड कर ही दूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू वेरी सून इन दुबई। दिलीप जी ये ईश्वर का चमत्कार। थैंक यू। देखो ऐसे आग फैल रही है। हाँ, ये चमत्कार कहते हैं, जब दूसरों का भला सोचो तो कैसे भला इकट्ठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। Grateful. This will give a meaning to and a purpose to the meeting. Absolutely, absolutely. शायद मैं सितंबर में एक बुक फेस्टिवल हो रहा है अबू धाबी में, अगर मुझे बुक फेस्टिवल में आना हो सितंबर में तो I would probably see in Dubai itself that time. Otherwise later. हम आपकी बुक का सॉफ्ट कॉपी एक्सेस हमको चाहिए था। Sorry? आपकी बुक का एक्सेस टू द I mean I wanted the link to access the books, तो सॉफ्ट कॉपी एक्सेस अगर मिल सके। Yes, तो मेरी ईमेल नोट करो, Kiran Bedi office, सब जने sisters and friends please note my email is kiranbedioffice@gmail.com. I have this, yeah. Okay, once you send me a request for soft copy, I'll send you soft copy directly. Okay, perfect. I will send every one of you a soft copy directly with my compliments. Thank you. जिसकी ईमेल आएगी उसको पहुंच जाएगी। मेरा डेस्क, मेरी डेस्क की लड़की है रिंकी, वो तुम्हें सारी जने भेजेगी। She's sitting here. I'm in touch with Rinki, yeah. So she will send you, she will reply. I've done this with many students, etc. Whoever sent me an email, I've received this book. Yeah. So email This is what accessibility is. This is accessibility. Yeah, send it to me and my staff Rinki will send it to you. Yeah, sure. Somebody has already said, already done. Kiran Bedi office, one word, @gmail. Okay. We And will just put it on the chat box now. That's नहीं right. We will connect. God willing. हाँ, ये भगवान की कृपा है, दूसरे का भला हो. This is, Thank I you think so much. Ujala has already sent you, Kiran Bedi office. Yeah, yeah. Ujala has sent me. Yeah. Ujala, Thank you send so yours. much, ma'am. Ujala, Thank send you. yours also. Can you please send yours also for Biren Bhai and Tanu, etc. Ujala, this is Ujala. Ujala@navjyoti.org. Ujala का मेरे पास है, yeah, we have it, but yeah, for the benefit of everybody and Viren bhai, Ujala, she's working with Navjyoti, so. Could you put it back? Perfect. And her mobile is on WhatsApp is 99102-30300. This is a mobile, so that we get going right away. We don't delay. And why I'm saying urgent? So that we are doing it at the right time before the monsoon comes. Monsoon comes, yes. We don't lose the rain, whatever rain comes. Yeah, very true. Thank you so much. Thank Thank you. you so much. Thank Very you so please much. type- Thank you so Lavanya, much. type the mobile number, she says. Type the mobile number, Ujala. She has typed it already. Acha, theek hai, done. वो आ गया है। Here it is. 9910230300. Correct. Yeah. Correct. So We have looking forward to meeting you all in Delhi. Any one of you coming. We'll take you to the rural project. Okay, ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. so Thank you. much. Namaskar. Yeah. Pranam. Chal- Thank you, No Kiran ji. words to say. बहुत-बहुत Thank प्रणाम. you. Thank you. Thank Very you, lovely, Meena ji very from nice. Japan. Oh, thank you. Very lovable indeed. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. કરું પડે ને. Thank you. ના ના ચાલુ જ છે અવાજ તો આવે છે પછી કે Can we end this now, Ragini ji? Ji, yes, yes.